सर्कमपोलर बॉडीज और रैशनल हॉराइजन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ इन क्वेश्चंस में कभी कभी टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो एड ऑन हो जाता है. सो वी नीड टू बी क्लियर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम्स. टोटल देयर आर 6 टाइम्स. ओके, लोकल मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, लोकल अपरेंट टाइम, ग्रीनविच अपरेंट टाइम, लोकल साइडेरियल टाइम, ग्रीनविच साइडेरियल टाइम. सो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा. एंड अलॉन्ग विद इट आई विल आल्सो गिव यू एन आइडिया, एक्सप्लेन यू अबाउट द इक्वेशन ऑफ टाइम, जिसमें हम मीन सन और ट्रू सन के बारे में सीखेंगे. सो पहले ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे एंड वंस दिस इज अंडरस्टूड देन आई विल शो यू सम मोर क्वेश्चंस वेयर दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज यूज्ड. और फिर कुछ एक क्वेश्चन जो है वो स्टार आइडेंटिफिकेशन के आज हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बेसिकली टेक केयर ऑफ द रैशनल हॉराइजन टाइप क्वेश्चंस. सो शैल वी गो अहेड विद द प्रेजेंटेशन? रेडी? सर आपने असाइनमेंट नंबर 3 के बाद कोई असाइनमेंट सेंड नहीं करी है ना सर? सर्कमपोलर के अलग से तो कुछ आज आएगी असाइनमेंट नंबर 4. ओके सर. ओके सर, इसी में वो ट्वाइलाइट होल नाइट वाला कॉन्सेप्ट भी इसी में होगा ना सर? बेटा ट्वाइलाइट ऑल नाइट भी लास्ट टाइम. यस सर, आपने कुछ सेंड किया था वो थियरी पार्ट हमने वाला. क्लास में डिस्कस भी किया था बेटा. हाँ Did जी you सर. miss that? नो सर, आई नॉट मिस्ड. आई एम जस्ट आस्किंग दैट उसका कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं है? नो 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 असाइनमेंट फॉर दैट बेटा. उसके लिए यूजुअली थ्योरी क्वेश्चन आता है और एक वेरी सिंपल न्यूमेरिकल आता है जिसमें वो कंडीशन अप्लाई होती है. नो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट. You just have that screenshot of twilight throughout the night ना. Just remember Yes. those 3 conditions. यस सर, एमएमडी क्वेश्चन में थियरी आते हैं वो उसी के लिए. Yeah, for theory you can make that diagram and explain it exactly as mentioned. ओके ओके सर. Okay. एक वो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार में एक क्वेश्चन सर ना सर, रिलेटिव ब्राइटनेस इज इक्वल टू करेंगे बेटा 2.51. करेंगे. आई सॉ दैट. मैं उस टाइप का क्वेश्चन आपको बता दूंगा बट दैट विल बी आफ्टर रैशनल हॉराइजन. आज टारगेट जो है रैशनल हॉराइजन का है. अगर पॉसिबल हुआ तो आज ही पिक कर लेंगे. इफ नॉट देन नेक्स्ट क्लास में दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल पिक अप. ओके सर. ओके. हाँ बेटा, हाँ, दैट इज ऑल्सो देयर. आफ्टर दिस दैट इज द ओनली थिंग विच इज रिमेनिंग. ओके. अरे वाला भी करवाओगे ना? ओके बेटा, मैंने आपको थ्योरी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ लिस्ट भेजी है. सम क्वेश्चंस डिड आई सेंड यू? यस सर एक आया था. प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरी क्वेश्चन जिसमें 14 क्वेश्चंस थे. और जस्ट गो थ्रू दोज क्वेश्चंस बेटा. मैंने उसमें ना बुक के पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर भी लिख दिए हैं. सो ऑल आर फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन. जस्ट गो थ्रू देम and that should clarify the theory concept which are required. अगर किसी में डाउट है let me know. एंड सर PZX ट्रायंगल के क्वेश्चन सर वो वाला असाइनमेंट होगा क्या? आ जाएगा बेटा, अभी हम कर रहे हैं उसे. इसके बाद आपको आज मिलेगा. ओके सर. सर स्टार आइडेंटिफिकेशन वाला भी करवाएंगे ना आप? करवाएंगे बेटा, आज होगा. we will do that. वो सब PZ में आ जाएगा ना सर? Yeah, it is covered under PZX only, but sometimes उनको tricky बना दिया जाता है. So I'll show you an example. Okay बेटा. हाँ बोलो जी. तो एक मीटिंग में बता दीजिएगा सर, नोटिस टेबल का यूज करने के लिए आपने कहा था कि बता देंगे. You mean to say the X meridian tables? हाँ सर, वो हमें एक डाउट था ना क्वेश्चन नंबर 7 में. बेटा X meridian tables की बात कर रहे हो? हाँ सर, नोटिस टेबल वो सर उसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं. आपने कहा था बता देंगे. तो X meridian लिमिट नहीं निकाल पा रहे हो? नहीं सर, नहीं निकाल पा रहे सर. वो काफी नो प्रॉब्लम. आज के लेक्चर के बाद स्टे कनेक्टेड. बिफोर आई डिस्कनेक्ट आई विल शो यू. ओके थैंक यू. ओके बेटा. सर ये अब बेटा एक और बात बाकी के डाउट्स जो है वो प्रेजेंटेशन के बाद लेते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन और फिर जो मैं एग्जांपल्स कराऊंगा उसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन विद फर्दर डाउट्स. लेट अस गो थ्रू द प्रेजेंटेशन. ओके. ओके. ओके.
In this presentation, we are going to learn some of the concepts related to time in navigation. We have seen time being referred to as mean time or apparent time or sidereal time. We will see in this presentation what do we mean by these three different types of times. Also, we have seen that the sun being referred to two different types, true sun or the apparent sun and the mean sun. So we are going to understand what are these two different types of suns. Now to start with, let's go a little bit back in history. When we started measuring the time, we measured the time with the help of the true sun, the actual sun, the apparent sun, which we see in the sky. That time we used to have sundials. The shadow of the sundial used to indicate the time on a scale. Now, when we started measuring time using the sundials, we came to know that the unit of time which we measured using the sundial is not of a uniform duration. So the time as indicated by the true sun, also known as apparent sun, which was through a sundial, is not of a uniform duration. To give you an example, 1 hour of time in the month of January may not be same as 1 hour of time in the month of June. So when we observe that it is not a uniform duration, we came to know that we cannot use this reference of time as a standard unit. A standard unit should not vary. It should be of a standard duration. Now, why does the time measured by the true sun is of a non-uniform duration? How does the time keeps on changing? The duration of time keeps on changing. This is because of the elliptical shape of the Earth's orbit. The orbit of the Earth around the sun is elliptical, and when the Earth is moving in its orbit, the motion of the Earth is a non-uniform motion. It does not move with a fixed speed. The speed keeps on changing. This is as stated in the Kepler's laws of planetary motion, that all the planets orbit around the Earth in elliptical orbits, and the speed of the planet when it is moving on that elliptical orbit keeps on changing. Whenever it is closer to the sun, the linear velocity of the planet increases, and whenever it goes far away from the sun, the linear velocity of the planet in its orbit goes down. So it is basically because of this reason that the time indicated by the true sun is of a non-uniform duration. Because as the speed of the Earth keeps on changing in its orbit, the relative speed of the sun moving in the sky also changes. The second reason why the time measured with true sun is of non-uniform duration is that our measurement of time is with respect to the longitudes, with respect to the poles, and the motion of the sun is along the ecliptic. Ecliptic is inclined at an angle of 23.5 degrees approximately to the equinoctial. So this also brings in some non-uniformity. When the sun is close to the equinoctial and when the sun is at maximum declination north or south, it leads to a slight change in the duration of time. Now, we cannot therefore use the time measured by the true sun as a standard unit of time. So what was done to take care of this problem? To have a standard unit of time, astronomers have invented a mean sun, which is a fictitious body, and it is imagined to move at a uniform rate or a uniform speed along the equinoctial. This uniform speed is equal to the average or the mean rate of motion of the true sun on the ecliptic. So what we did was we invented a fictitious body known as the mean sun, and we calculated the mean speed of the sun throughout the year. For one complete full orbit, we calculated the mean speed with which the sun moves, and the mean sun
was assumed to move at that particular speed only. Second thing, mean sun was assumed to move along the equinoctial and not along the ecliptic. So using this body mean sun, we took care of both the issues, both the problems which the true sun had. One, the motion was non-uniform, so mean sun is assumed to move at a average speed or the mean speed of the sun. And secondly, it was moving on the inclined at an angle of approximately 23.5 degrees to the equinoctial, whereas the mean sun which we assumed that it moved on the equinoctial. Now the time which we measured with reference to the mean sun is known as the mean time. Like say for example GMT, that is Greenwich Mean Time, and it tells us that it is based on the mean sun. The time which is referred to the true sun is known as the apparent time. So beta, any doubts coming up to here? Yes, sir. This our angle for 1 minute of sun is around 15 degrees. 1 hour. No, I didn't get you. Ask again, beta, slowly. The this hour angle covered by this mean sun is around 15 degrees so for every hour. That's right, beta, 15 degrees per hour. And it's the same for the Aries. For Aries, it is 15 degrees, 2.5 minutes per hour. Aries is slightly faster. Okay, okay, understood. Aries and the stars, the true, and mean sun is 15 degrees per hour. Yeah, that's right. Mean sun is 15 degrees per hour. Aries and stars, 15 degrees, 2.5 minutes per hour. Okay, sir. Okay. Now with this basic understanding of the true sun and the mean sun clear in our mind, let's go into the definition of the mean time, the apparent time, and also the sidereal time. We will try to understand what do we mean by these times. So first we go into the definition of local mean time or LMT. Local mean time or LMT is the westerly hour angle of the mean sun measured from observer's inferior meridian. So what is this LMT? This LMT is the westerly hour angle. From where is this westerly hour angle measured? It is measured with reference to the observer's inferior meridian, and up to which point it is measured? It is measured up to the mean sun. Let's try to understand it using one diagram. Now let's assume we are looking at the Earth from top of the North Pole. You can see the Earth coming up on the screen. Exactly in the middle we have the North Pole here, and let's assume that this meridian which we see, the dotted line which we see in the diagram, is the Greenwich meridian. Exactly opposite to it, in the opposite direction, we will have the 180 degree meridian. So 180 degree meridian also comes up on the screen. Now let's assume that we have an observer located at this particular location. Let's mark off the observer's meridian also. Now you see this dotted line coming up marking the observer's meridian. Exactly in the opposite direction, reciprocal to it, will be the observer's inferior meridian. So in our diagram, looking from top of the North Pole, we have the Greenwich meridian, 180 meridian, observer's meridian, and the observer's inferior meridian. Now let's assume that at a particular instant, the mean sun is at this particular location. You can see the mean sun coming up on the screen. Let's draw the meridian of the mean sun also. This is the meridian of the mean sun. Now, before we go into the definition, one important thing to understand here in this diagram, that when we are looking from top of the North Pole,
the clockwise direction represents the westerly direction. This hemisphere which you see on the right side is the eastern hemisphere. The hemisphere which you see on the left side of the earth is the western hemisphere, and the clockwise direction represents the westerly direction. So now we can go into the definition of the LMT. This red color arc which you see, the red color angle which you see, is the local mean time for this observer. Let's try to match it with the definition. LMT is the westerly R angle. So you see the direction of this red color arc and angle is the westerly direction as represented by this arrow. It is the R angle of the mean sun. You see we have measured the angle up to the mean sun, and it is measured from the observer's inferior meridian. So starting from the observer's inferior meridian, this is the observer's inferior meridian, going in the westerly direction and going up to the mean sun. This particular angle is what we call as the LMT, local mean time. This can be denoted in a angular unit, that is degrees and minute, but the normal mode in which we denote the times are in hours, minute and seconds. How to convert the angular unit to hour unit? We know 15 degrees of angle is equal to 1 hour. How did we get this conversion figure? We know 360 degrees of meridian. When the sun moves around 360 degrees of meridian, it constitutes 1 day, which comprises of 24 hours. So 360 degrees refer to 24 hours, telling us that 15 degrees is equal to 1 hour. So using this conversion factor of 15, we can convert this angle into hour, minute and second, and vice versa. Beta, any doubt in this definition? Clear? Sir, mean sun position is fixed. No, not fixed, beta. It will keep on moving. Okay, sir. It will keep on moving, and that is exactly the reason why the time also keeps on changing. As the mean sun moves, you see the time also changing. That is why our clock is ticking. Okay, let's go ahead. That's right, beta. Whenever you look from top of the North Pole, usually whenever we make these diagrams, we are always looking from top of the North Pole. And in that case, the clockwise direction will be the westerly direction. Let's now go into the definition of Greenwich Mean Time, or GMT. It is very similar to LMT. GMT, or Greenwich Mean Time, is the westerly R angle of the mean sun measured from inferior meridian of Greenwich. Let's have the same diagram coming up on the screen. Looking at the Earth from top of the North Pole, you can see the Earth, the North Pole. We have the observer also here in the same location, and we have the Greenwich meridian, 180-degree meridian. Let's assume the mean sun at this particular location. Let's draw the meridian of the mean sun. Now GMT is referred to by this red color arc and angle. So you see GMT is the westerly R angle. You can see this angle is measured in the westerly direction. It is the angle of measured up to the mean sun. So you can see it is measured up to mean sun, and it is measured from inferior meridian of Greenwich. You see the angle is measured with reference to inferior meridian of Greenwich. So starting from inferior meridian of Greenwich, going clockwise in the westerly direction up to the mean sun, this particular angle gives us the GMT. So very similar to LMT. Only thing is the reference meridian for LMT was the observer's inferior meridian,
and the reference meridian for GMT is the Greenwich inferior meridian. Clear, beta? Any doubts? Clear, sir. Very good. Moving ahead. Let's now try to see the definition of local apparent time, or LAT. Looking at the word apparent, we know that it is referenced to the true sun. The GMT and LMT were referenced to the mean sun, but the LAT and after this the GAT, local apparent time, and Greenwich apparent time are referred to the true sun. So LAT is the westerly hour angle of the true sun measured from observer's inferior meridian. Let's have the same diagram which we referred to for GMT and LMT. You see the Greenwich meridian, inferior meridian, observer, and observer's inferior meridian all coming up. Now let's assume we have the true sun at this particular location. So we have the meridian of the true sun also. Now westerly direction is the clockwise direction. This red color angle which you see is the local apparent time. So LAT is the westerly hour angle. You see it is measured in the westerly direction of the true sun. You see it is measured up to the true sun, measured from observer's inferior meridian. The starting point or the reference is the observer's inferior meridian. So starting from the observer's inferior meridian, going in the westerly direction up to the true sun, this particular angle gives us the LAT at any particular instant for this particular observer. Clear, beta? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Let's move ahead. LMT भी तो सर सेम ही हो गई ना सर फिर? बेटा डिफरेंस एक ही है. LMT में मीन सन था, which is a imaginary sun. इसमें ट्रू ट्रू सन सन है. That is the difference. Okay. Let's now see the Greenwich apparent time, or the GAT. Greenwich apparent time is the westerly hour angle of the true sun, measured from the inferior meridian of Greenwich. So we have the same diagram on the screen. We have the Greenwich meridian, its inferior meridian. We have the true sun and the true sun meridian also. We have the direction shown in the diagram. This red color angle which you see is the GAT. It is the westerly hour angle. You see it is measured in the westerly direction of the true sun, measured up to the true sun, measured from inferior meridian of Greenwich. The reference point or the starting point is the inferior meridian of Greenwich. So starting from inferior meridian of Greenwich, going in the westerly direction up to the true sun, this particular angle is called as Greenwich apparent time, or GAT. Moving ahead now. Now let's move on to the sidereal times, local sidereal time LST and Greenwich sidereal time GST. Local sidereal time, or LST, is the westerly hour angle of the Aries measured from the observer's meridian. Now we are aware that the word sidereal means reference to first point of Aries. In case of stars also, we get their hour angle from the almanac as SHA, sidereal hour angle, and this SHA is measured with reference to first point of Aries. So likewise, the sidereal time are also measured with reference to Aries. So LST is the westerly hour angle of the first point of Aries measured from the observer's meridian. Now an important difference which you will notice here in this sidereal time is that in this case it is measured from the observer's meridian. The mean time and apparent time were both measured
with reference to the inferior meridians, but the sidereal times are measured with reference to the observer's meridian. So let us show it in a diagram. We use the same diagram looking at the Earth from the top of the North Pole. We have the Greenwich meridian, 180-degree meridian, observer meridian, and the observer's inferior meridian. Now let's assume we have first point of Aries represented by this symbol at this particular location. We have the meridian of the Aries also coming up. The westerly direction also comes up on the screen, which is the clockwise direction in this case. Now this red color angle which you see is the local sidereal time. So you see, starting from the observer's meridian, going in a westerly direction and going up to the first point of Aries. This angle gives you the local sidereal time. You can check it with the definition. LST is the westerly R angle. You see it is measured in the westerly direction, which is the clockwise direction in this diagram. Of the Aries, you see it is measured up to Aries, and it is measured from the observer's meridian. The starting point is the observer's meridian. This is local sidereal time. Is that clear, beta? Any doubts? No, sir. Okay, great. Now, one important thing you will realize here looking at this diagram, that this local sidereal time is also equal to LHA Aries. LHA Aries is also exactly the same angle. So Yes. LHA is usually measured in angular units, whereas LST is measured in units of time. So just by multiplying the LHA Aries with 15, you can get the local sidereal time. Yes, okay. Okay, great. Let's move ahead. Now moving on to the Greenwich sidereal time or GST. Greenwich sidereal time or GST is the westerly R angle of the first point of Aries measured from the Greenwich meridian. So very similar to LST, only difference is the starting point instead of the observer's meridian now is the Greenwich meridian. So we have the same diagram coming up. You have the westerly direction marked clockwise. Now this particular red color angle which you see is the Greenwich sidereal time. So GST is the westerly R angle. You can see it is measured in the westerly direction, clockwise direction. Of the first point of Aries, you see it is measured up to first point of Aries, and it's measured from the Greenwich meridian. This is the Greenwich meridian. Starting from the Greenwich meridian, going in the westerly direction or the clockwise direction up to the first point of Aries, this particular angle gives you the Greenwich sidereal time. Now, whenever we make this diagram, as a reference, we always show the Greenwich meridian at the bottom. The Greenwich meridian is shown at the bottom, and all the other references can be drawn with respect to the Greenwich meridian. Exactly, beta. That is correct. So this Greenwich sidereal time is equal to GHA Aries. If it is shown in angular units, it becomes the GHA. If you multiply or divide the GHA by 15, it converts into GST. Okay, moving ahead now. Now all these 6 definitions which we have seen, that is the local mean time, Greenwich mean time, local apparent time, Greenwich apparent time, local sidereal time, and the Greenwich sidereal time. All these definitions, all these terms are used sometimes in the numerical based on time. So the questions which you will have coming in the paper will have these terms as reference.
So till the time these definitions are not clear in your mind, you will not be able to attempt that question. So the first step to attempting the time numericals is having these definitions clear in your mind. Once you have understood these definitions, you should memorize them. And whenever one of these terms is used, say for example, Greenwich sidereal time is used, this should come to your mind that this Greenwich sidereal time is giving me the westerly hour angle of the first point of Aries from the Greenwich meridian. Once this concept is clear in your mind, you will be able to make this drawing, specify this angle in that drawing, and that will help you to solve the question. A understanding of all these 6 definitions, clarity of all these 6 definitions in your mind is a must before attempting the time numericals. Now, having understood the mean time, apparent time, sidereal time concept, we now move on to the concept of equation of time. What is this equation of time? At the first glance, it appears to be an equation, a mathematical equation, but it is not an equation. Equation of time is basically a duration of time. Equation of time is the difference between the mean time and the apparent time measured from the same meridian at any particular instant. Basically, the equation of times tells us that the mean sun and the true sun are how much far apart. What is the time difference between the mean sun and the apparent sun? Say for example, if the mean sun is on my meridian right now, even though it's an imaginary sun, let's assume the mean sun is on my meridian. After how much time the true sun is going to come on my meridian, this difference or this duration of time is called as the equation of time. So it is a duration of time and is expressed in minutes and seconds of time. We know that the mean sun moves with a uniform speed, uniform lateral speed on the equinoctial, but the true sun keeps on changing its speed because of Kepler's laws of planetary motion. The true sun's speed keeps on changing. So at a particular point of time, it is possible that the true sun is moving faster and the mean sun is left behind. And at another time, it is possible that the true sun is moving a little slower and the mean sun takes over and is running ahead. The difference between these two is given by the equation of time. Now, if the mean time is greater than the apparent time, that means the mean sun is ahead of the true sun, the equation of time is considered as positive, and if the apparent time is greater than the mean time, or in other words, you can say if the true sun is running ahead of the mean sun, the equation of time is considered negative. So the sign of the equation of time, whether it is positive or negative, tells us which of the two suns is ahead in the race. If the equation of time is positive, the mean sun is ahead, and if the equation of time is negative, the true sun is ahead. The maximum value of the equation of time throughout the year, year after year, the maximum possible value of the equation of time is 16 minutes and 22 seconds. That is the maximum difference which can happen between the two suns. The equation of time at the meridian passage time of the sun can be easily obtained as whatever is the meridian passage time minus 1200 hours gives you the equation of time correct to the nearest minute. So you can use this simple formula to get the value of equation of time from the almanac for any particular day at the time of Marpas. Any doubts coming up to here, beta? Sir, please explain the equation. Sir, can you please explain the last equation that you have written first time minus 12 hours equal to E?
Okay, beta. If you want to calculate the equation of time value for any particular day at the time of meridian passage, then you can use this. Whatever is the meridian passage time, LMT meridian passage, minus 1200 hours. That gives you the equation of time which is correct to the nearest minute. Is that clear, beta? सर ये फर्स्ट लाइन थोड़ा क्लियर कर देंगे सर. इक्वेशन ऑफ टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन टाइम. ये थोड़ा सा आपने बताया ना, अगर मीन सन हमारे ये थोड़ा समझ है. ये पहला पॉइंट समझ में नहीं आया बेटा. इसका सिंपली ये मतलब है कि जो ये इक्वेशन ऑफ टाइम है वो इक्वेशन ऑफ टाइम हमें ये बता रही है कि मीन सन और ट्रू सन, मीन टाइम इज रेफर टू मीन सन, एपरेंट टाइम इज रेफर टू ट्रू सन, इन दोनों के बीच में कितना गैप या कितना डिफरेंस है, कितना टाइम इंटरवल है, एक सन दूसरे सन से कितना पीछे या कितना आगे है. दिस इज व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टाइम. ओके सर. असल में आपने एक पॉइंट कहा था ना, अगर मीन सन हमारे मेरिडियन पे रहेगा तो ट्रू सन वो से वो बढ़ सकता है. ओके बेटा, लेट अस से मीन सन हमारे मेरिडियन पे आता है 12:10 पे. एलएमटी हमारे पास 12:10 is the meridian passage time. So at this meridian passage time the true sun is coming on our meridian. Okay, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में एल्मनैक के पेज से भी ये टाइम निकाल के दिखाता हूँ. लेट मी शो यू. ओके. Now for any other time of the day other than the meridian passage time, it can be obtained from the almanac as it is given on the daily page for 0000 hours and 1200 GMT hours. Like if you see at the bottom of the right side page of the almanac, under the column of the sun, you will see the value of the equation of time given for 00 hours and 12 hours at Greenwich in GMT. So you can see on this particular day, 7th day, the equation of time value at 00 hours was 11 minutes and 01 seconds. At 1200 hours, the equation of time became 10 minutes and 54 seconds. Now for any intermediate time, if you want to find the value of equation of time for any time between 00 and 1200, you can interpolate and find out what is the value of the equation of time. Equation of time is considered positive if the mean sun is ahead and is considered negative if the true sun is ahead. Sir, as per the formula you stated just now, past time Right. minus 1200 will give us equation of time. Right, so beta. Sir, we can actually obtain, for example, in this slide which is showing for the day of 7th of this month. Right. So this equation of time is coming 11 minutes, sir. Exactly, in beta. general. Because that formula is having accuracy only up to the minutes, nearest minute. Okay, sir. Okay, understood. Okay. When So you we see interpolate, so we'll using get seconds of. right. If you want accurate up to seconds, then you can interpolate between 00 hours and 12 hours. Got it, sir. Okay, sir. Okay. जैसे आप देखेंगे 1211 minus 1200 gives you 11 minutes and the value is actually 10 minutes and 54 seconds. So it is correct to the nearest minute. Yes, sir. Okay. Okay. सर सो बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ टाइम जो दे रहा है इट इज गिविंग जो ट्रू सन है उसका टाइम दे रहा है एंड हमारे पास इज गिविंग अपेरेंट सन का जो हमने इमेजिन किया है. अगर हम इन बिटवीन इंटरपोलेट करेंगे बिटवीन 00 आवर्स एंड 12 आवर्स तो इन दोनों इक्वेशन ऑफ टाइम का इंटरपोलेशन होगा. हमारे पास टाइम सेम ही रहेगा ना? हाँ बेटा, that is correct. Marpa's time is not going to change. The equation of time is going to change. Like for 00 hours, equation of time was 11 minutes 1 second. For 1200 hours, equation of time was 10 minutes 54 seconds. If you are at 0600 hours, it will be exactly midway, somewhere close to, let us say, 10:57 or 10:58. So that is what we mean by interpolation. It will be between the equation of time value for 00 and 12.
Okay, sir, copied on that. So, sir, this basically means that at 00 hours, mean sun was ahead of the true sun by 11 minutes and 1 second. Exactly, beta. That is correct. Okay, sir. सर ये जो 00 आवर है ये क्या? True mean sun, correct sir? Beta, one by one, please ask again. सर मेरा डाउट है यहाँ पे जो सर 00 आवर है और ये जो 12 आवर है ये सर टाइम ऑफ द ट्रू सन है। नहीं बेटा, ये GMT है। 7th डे को 00 hours GMT, इक्वेशन ऑफ टाइम वाज 11:01। सर 00 मीन सर मिडनाइट होगा ना, नाइट या 00 hours means GMT beta, 7th day, whatever it is, 7th day, whichever month it is, and 00 hours GMT. Equation of time was 11 minute and 01 second. This is the GMT time beta. 00 hour is GMT. 12 hour is GMT. Is that clear now beta? Yes sir, and the past mean 12 hour इसका जरा बता दीजिए। ओके, अब बेटा जो मरपास है, मरपास में क्या डाउट है? सर मरपास when the true sun on the observer. Right, Marpas is when the true sun is on the observer meridian. That is correct. Okay sir. ओके, और बताओ बेटा, और क्या डाउट आ रहा है? सर ये पूछ रहा था, ये हमारे पास जो टाइम दिया होगा वो मीन सन का है, ट्रू सन का है सर? एलमनाक में इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो ट्रू मीन सन की है सर? बेटा देखो, जो मेरिडियन पैसेज होता है ना, वो हमेशा एक्चुअल सन का होता है, क्योंकि मीन सन तो इमेजिनरी है, वो तो दिखेगा ही नहीं, तो उसका मरपास टाइम जो है वो क्यों देंगे? जो मरपास टाइम हमें दिया गया है वो ट्रू सन का मरपास टाइम है। This Marpas time is LMT, right? It is, to be very accurate, it is basically GMT, but you can consider it as LMT for any meridian. Okay sir, okay. सर पर आपने जो फॉर्मूला बताया था मरपास टाइम माइनस 1200 आवर्स विल गिव इक्वेशन ऑफ टाइम, तो इसमें मरपास टाइम जो 12 आवर्स 11 मिनट है, तो ये तो बेसिकली 11 मिनट हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टाइम, राइट? बट इसमें अगर हम निकालेंगे इन बिटवीन इट विल बी लाइक सपोज इन बिटवीन 10 मिनट 57 सेकंड्स। बेटा आपने वो फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी बेटा, वो थी करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है मरपास टाइम माइनस 1200, दिस गिव्स यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट। ओके, बट जो ये 00 आवर और 12 आवर की फिगर है, दिस गिव्स यू एक्यूरेसी इन सेकंड्स। सर मतलब ये जो अगर 7th डे रहेगा और 00 आवर मींस सर इट इज द टाइम when the observer on the 00 hour, that time true sun will be 11 hour 01 sorry 11 minute 01। ओके सर, समझ गया सर। सर मींस ये जो डिफरेंस रहेगा वो 11 मिनट और 01 सेकंड का रहेगा। Exactly beta, difference between the two suns, mean sun and the true sun, will be 11 minute and 01 second. ओके सर। ओके, क्लियर है बेटा, आगे चले? सर ये 00 आवर और 12 आवर मींस सेम लाइक inferior meridian और observer meridian? No beta, these are times, does not mean inferior and observer meridian. ये तो टाइम है बेटा। 7th December, let us assume that it is month December, 7th December 00 hours GMT. What is the equation of time? 11 minute and 01 second. That means mean sun is 11 minutes 01 seconds ahead of the true sun. At 1200 hours, the difference is only 10 minutes and 54 seconds. रोज के दो है मतलब दिए? रोज के दो दिए गए हैं, बाकी के आप इंटरपोलेट कर सकते हो। सर ये पूरे कहीं पे भी मुझे माइनस कहीं दिखा नहीं सर इक्वेशन ऑफ टाइम में कहीं। ओके, अब अगर आपको माइनस निकालना है बेटा, उसके लिए जो अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला है ना, उसे यूज करो।
I'll show you. I'm going back. The formula was Marpa's time minus 1200 gives you EOT, equation of time, right? Yes, sir. एल्मनैक में इन्होंने कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं दे रखा है. आप चेक करो व्हाट इज द मेरिडियन पैसेज टाइम. If the meridian passage time is less than 1200, let us say it is 11:55 on a particular day. तो आपको पता चल जाएगा इक्वेशन ऑफ टाइम नेगेटिव है, ट्रू सन आगे आ गया है. So that is what gives you the sign. The almanac doesn't give you the sign, बेटा. अच्छा, ओके, क्लियर. ओके, क्लियर बेटा? यस सर. एक चीज पूछना था सर, दिस MS जो लिखा हुआ है ना सर, ये मीन सन है या मिनट और सेकंड है सर? MS कहाँ लिखा है बेटा? सर जो 11:01 के ऊपर लिखा हुआ है. ओहो, that is minute and मिनट्स एंड second. सेकंड्स है भाई, मिनट और 11 minute and 01 seconds. ओके. सर वो एक ये दोबारा समझाना सर, ये आपने अभी बताया कि जो सा ट्रू सन 11:55 था सर. राइट. हाँ सर, मेरा वही डाउट है. ओके, रुको 11:55. मैं अभी समझाता हूँ तुम्हें. लेट मी टेक यू टू द व्हाइट बोर्ड. अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे. होल्ड ऑन. ओके बेटा, ग्रेट. अब ध्यान देना जरा. मैं व्हाइट बोर्ड पे अब आपको बना के दिखाता हूँ कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. अब क्लियर हो जाएगा. लेट अस से हम ये पर्टिकुलर डे की एग्जांपल लेते हैं. ये मैंने ऑब्जर्वर मेरिडियन बना दिया बेटा. ऑब्जर्वर मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन नहीं बना रहे हैं. यहाँ पे ऑब्जर्वर है. आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन. हाँ जी सर, हाँ जी. यस सर. वेरी. यस सर. अब ये डॉटेड लाइन में ऑब्जर्वर का इंफीरियर मेरिडियन बना देते हैं. ये ऑब्जर्वर का इंफीरियर मेरिडियन आ गया. अब बेटा यहाँ पे जो ये एग्जांपल हमने ली, 7th डे को 00 आवर्स पे इक्वेशन ऑफ टाइम आ रही है 11 मिनट एंड 01 सेकेंड्स. अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? मेरिडियन पैसेज टाइम आ रहा है 12:11, राइट? सो दिस 12:11 कैन बी टेकन एज LMT. इसका मतलब है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब, LMT is 12:11. ये किस चीज का LMT है बेटा? ये मेरिडियन पैसेज का LMT है. तो लेट अस राइट मेरिडियन पैसेज हियर. सो क्लियर बेटा? अप टू हियर इज ओके. 12:11 टाइम मेरिडियन पैसेज का है. दोनों मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए. राइट बेटा? वेरी गुड. मेरिडियन पैसेज का मतलब ये होता है कि सन हमारे मेरिडियन पे है. कौन सा वाला सन? ट्रू वाला सन. तो मैंने बेटा सन को यहाँ बना दिया. ये मैंने यहाँ पे सन को बना दिया. ऑब्जर्वर के मेरिडियन पे सन आ गया है. दिस इज मेरिडियन पैसेज. करेक्ट बेटा? एवरीबडी ओके विद दिस पोजीशन ऑफ द सन? वेरी गुड. ये कौन सा सन है? ये ट्रू सन है. मैं यहाँ लिख भी देता हूँ. ये वो वाला सन है जो हमें दिख रहा है. सो लेट्स मार्क इट एज TS, ट्रू सन. ट्रू सन जब मेरिडियन पे आता है तभी मेरिडियन पैसेज होता है. अब एक और चीज हमें एल्मनैक बता रहा है. दिस इज हैपनिंग एट 12:11. ये 12:11 कौन सा टाइम है बेटा? इट इज द LMT, लोकल मीन टाइम. LMT की डेफिनेशन अभी हमने की है. बताओ क्या होती है LMT की डेफिनेशन? सर, ऑब्जर्वर्स इंफीरियर मेरिडियन से वेस्टवर्ड. वेरी गुड. ऑब्जर्वर के इंफीरियर मेरिडियन से वेस्टर्ली आर एंगल मैंने मेजर करना शुरू किया. यहां तक हो गया 12. ओके, 180 डिग्रीज इज बेसिकली 12 आवर्स. 11 मिनट और आगे जाना है मुझे. 11 मिनट और आगे चला गया मैं यहां तक. दिस इज द लोकेशन वेयर वी विल हैव द मीन सन. यहां मैं लिख देता हूं MS.
दोनों के दोनों सन वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करते हैं, चाहे वो मीन सन हो चाहे वो ट्रू सन हो। सो ये जो एंगल ग्रीन कलर का हमने बनाया, दिस एंगल इज बेसिकली 12 आवर एंड 11 मिनट। आप इसे एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इफ यू मल्टीप्लाई इट विद 15 तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, एग्जैक्ट एंगल। एंड इन दोनों में जो ये डिफरेंस है, ये कितना डिफरेंस है? ये बेसिकली 11 मिनट एंड 02 सेकेंड का डिफरेंस है। 11 मिनट एंड 02 सेकेंड का डिफरेंस है ये। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इक्वेशन ऑफ टाइम। सो अब बताओ बेटा क्या डाउट आ रहा है? सर हाउ वी गेट सर 2 सेकंड सर? सर दोबारा बताइए ना, समझ में नहीं आया सर, ये कांसेप्ट थोड़ा दोबारा बताइए सर। बेटा अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या समझ में नहीं आया। नहीं 12 हाउ वी गेट सर 2 सेकंड सर? 2 सेकंड सर 2 सेकंड से 1 सेकंड था सर। 1 सेकंड ना सॉरी 1 सेकेंड था ना? या दैट्स करेक्ट, 1 सेकेंड बेटा, सॉरी इट वाज 1 सेकेंड। 00 आवर्स की एग्जांपल ली थी, 1 सेकेंड, दैट्स करेक्ट। अब मुझे डाउट बताओ बेटा। Sir, and mean sun, sir, will always be ahead of true sun, correct, sir? नहीं बेटा, मीन सन पीछे भी हो सकता है। अगर मेरिडियन पैसेज टाइम 1150 होता बेटा, 1150, तो मैं ये ग्रीन कलर का एंगल 1150 बनाता ना, तो मीन सन पीछे आ जाता बेटा, हाँ, okay, sir, understood. और इक्वेशन ऑफ टाइम नेगेटिव हो जाती। तो सर बेसिकली जब हम एल्मनाक में देखेंगे, हम मरपास टाइम देखेंगे। अगर वो लेस देन 12 आवर्स होगा तो नेगेटिव है इक्वेशन ऑफ टाइम, और मोर देन 12 आवर्स है तो पॉजिटिव है। करेक्ट बेटा, दैट्स राइट, वेरी गुड। सर डाउट ये हो रहा है सर, जो 11 मिनट्स है ना सर मरपास में, करेक्ट, और इक्वेशन ऑफ टाइम 11 मिनट 01 सेकंड्स है सर। राइट बेटा। ओके, ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? मरपास टाइम में 11 मिनट का डिफरेंस है, इक्वेशन ऑफ टाइम में 1 सेकेंड भी आ गया, करेक्ट। ये डाउट आ रहा है ना? हाँ सर। ये डाउट इसलिए आ रहा है बेटा, इसका रीजन ये है कि जो ये मरपास टाइम हमें दे रखा है ना सन का या मून का, इट इज गिवन ओनली अप टू एक्यूरेसी ऑफ मिनट्स। इसके ऊपर देखो एच और एम लिखा हुआ है, आवर्स एंड मिनट्स, इसमें सेकेंड्स है ही नहीं। इन्होंने इसे राउंड ऑफ कर दिया है टू द नियरेस्ट मिनट। और अगर आप इक्वेशन ऑफ टाइम के नीचे देखो तो आपको देखेंगे एम और एस, मिनट्स एंड सेकेंड्स। दिस इज एक्यूरेट अप टू सेकेंड्स। ओके, तो हमें दोनों लेना है सर, 11 मिनट्स 01 सेकंड्स तक लेना है। बेटा अब डिपेंड करता है, आपको अगर बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए देन यू लुक फॉर द इक्वेशन ऑफ टाइम इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। अगर आप सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहते हो, नियरेस्ट टू करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट, तो आप हमारे पास टाइम से उसे वैसे ही निकाल सकते हो। ओके 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 ओके। पॉजिटिव इज इक्वेशन ऑफ टाइम बेटा, प्लस 1101, 11 मिनट 01 सेकेंड इज पॉजिटिव, प्लस ये। ओ, इसका मतलब कुछ नहीं है बेटा, ये सिर्फ एक साइन कन्वेंशन है कि हम इसे पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। सर एक लास्ट डाउट सर, बोलो बेटा। 1054 का करेंगे? 1054 बेटा, 1200 आवर्स पे अगर आप इसे करोगे तो ये डिफरेंस 1054 का रह जाएगा। सो सर ये 12 आवर्स वाला हम लेंगे जब 12 आवर्स से ज्यादा का होगा, और 00 से वाला कब लेंगे जब 00 और 12 के बीच में हो, कुछ ऐसा है सर कि कैसा था? नहीं बेटा, इन्होंने यहाँ पे ना सिर्फ 2 बार ही दिन में इसकी वैल्यू दे रखी है, बिकॉज अगर ये हर एक घंटे में ये वैल्यू दें तो टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी की वैल्यू किसी भी टाइम पे अगर आप निकालना चाहते हो, यू कैन इंटरपोलेट बिटवीन दीज टू। सपोज जैसे 1300 आवर्स था सर। राइट बेटा, ओके। अब आपने 1300 के लिए अगर निकालना है तो आप 7th को 1200 आवर्स की वैल्यू पिक करो 1054, 8th को 00 की वैल्यू पिक करो विच इज 1047, इनमें डिफरेंस निकालो एंड इंटरपोलेट इट फॉर 1 आवर। ये डिफरेंस 12 घंटे के लिए है, आप 1 घंटे के लिए इसका डिफरेंस निकाल लो, अप्लाई दैट टू 1054। ठीक है सर, ठीक है, हो गया क्लियर सर, थैंक यू सर। ओके, और बताओ बेटा। Sir, as you told that all the data in almanac are given as per true sun. So why here you are taking, sir, this Marpa's timing for the mean sun?
which is 11 a minute and 1 seconds ahead of. Okay, because this is LMT बेटा, it automatically gets referred to the mean sun. अगर उन्होंने हमें LAT देना होता मरपास का तो सब दिन वो 1200 ही आता, ओके सर, ओके, क्योंकि मरपास पे सन हमारे मेरिडियन पे होगा एंड द एंगल वुड बी ऑलवेज 12. So there is no Right, meaning right. of given it in apparent time ना. Yes sir, thank you. Mean sun, okay. क्लियर बेटा, चले आगे. सर अभी जो आपने 1211 का इक्वेशन ऑफ टाइम 1101 दिया है, shouldn't it be like between 1054 and 1047 देन? मतलब हम इंटरपोलेट करेंगे ना. आपने 1101 कैसे लिया सर ये फॉर बेटा मैंने 1211? एग्जांपल ली थी 7th को 00 आवर्स की, दैट इज व्हाई आई पिक्ड अप 1101. हर्ष गॉट इट बेटा? नेगेटिव सर, नेगेटिव, आपकी आवाज नहीं आई. ओके बेटा, मैं ये बोल रहा था ये जो 1101 है ना, दिस आई जस्ट टुक ए एग्जांपल फॉर मेकिंग दिस डायग्राम दैट द टाइम इज 7th डे एंड 00 आवर्स GMT. ओके ओके, ऑल राइट, गॉट इट. ओके, इसके लिए मैंने डायग्राम बनाई थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एग्जांपल. ओके ओके सर. ओके बेटा, चलें आगे. हाँ बोलो बेटा, बोलो. सर ये इसमें मतलब समझ ये आता है कि उसमें ट्रू सन जो है वो 15 डिग्री के रेट से ही घूमेगा, और जो मीन सन का रेट कम और ज्यादा हो रहा है तभी तो ऊपर नीचे वैल्यू हो रही है. नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, मीन सन हमेशा एक यूनिफॉर्म रेट के साथ चलेगा, वो है 15 डिग्रीज पर आवर. ट्रू सन कभी थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, कभी थोड़ा सा स्लो हो सकता है. अगर ट्रू सन स्लो होगा तो वो पीछे रह जाएगा, अगर ट्रू सन फास्ट होगा तो वो मीन सन के आगे निकल जाएगा. मीन सन ऑलवेज मूव्स विद ए यूनिफॉर्म मीन स्पीड, इसीलिए उसका नाम मीन सन है. गॉट इट बेटा? ओके सर, इसमें मतलब 1200 लिया वो ट्रू सन के लिए लिया. मरपास पे तो बेटा ट्रू सन जब आएगा तभी मरपास होगा ना. कंफ्यूजन वही हो रहा है सर, मीन सन और ट्रू सन दोनों मिक्स हो रहे हैं. ओके. अरे मीन सन है क्या इमेजिनरी सन है, कुछ है ही नहीं हो. ठीक है बेटा, तू टेंशन ना ले, टेंशन ना ले. आगे इसके जब क्वेश्चंस करेंगे ना, वैसे इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया है, इतनी डिटेल में क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे. सो डोंट टेक टेंशन, रिलैक्स. ठीक है सर, गो अहेड सर. ओके, ऑल राइट, चलें बेटा, आगे चलें. यस सर. यस सर. अब सर बेटा उतना बताओ पेपर पास हो जाए. ओके ओके ओके, ठीक है, ज्यादा आगे ना जाएं डेप्थ में. नहीं सर, जाइए जाइए. जाइए सर, ज्यादा चले गए तो फिर लगेगा इसमें ही अटक गए. ओके ठीक है बेटा, सर, एक समझ गया मैं सवाल तुम्हारा बता दें। पॉइंट, समझ गया. नहीं सर, रुक जाते हैं आपका यहाँ जो पे. नहीं सर, आपका जो स्टाइल है सर, आप उसके हिसाब से पढ़ा सर. सर आप जैसे पढ़ाते हो वैसे ही पढ़ाओ, बाकी समझने वाले समझ जाएंगे, जिसको नहीं समझना हो. ओके. हाँ सर, आप और अपने स्टाइल से पढ़ाओ सर. ठीक है बेटा, रुक जाओ. अब मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको समझा रहा हूँ, अगर ये ना भी समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो लेट मी टेक यू देयर. यस सर, प्लीज. Now, a question which is sometimes asked in our exams is, explain the effect of equation of time on the duration of forenoon and afternoon. So with the equation of time clear in our mind, let's now try to see how does the equation of time affects the forenoon and afternoon. Forenoon is basically the time before 1200 hours on any particular day, and afternoon is the time after 1200 hours on any. मोहम्मद बेटा, प्लीज म्यूट योर माइक.
Thank you. Day. Also, we are aware that the meridian passage of the sun occurs exactly midway between sunrise and sunset. That means the time duration between sunrise to Marpas will be exactly same as the time duration between Marpas to sunset. The meridian passage divides the day into two equal parts as far as the duration is considered. We know that the equation of time is obtained using the formula Marpas time minus 1200 hours gives us the equation of time correct to the nearest minute. Now, as we can see, whenever the meridian passage time is before 1200 hours, the equation of time will be negative, and the negative equation of time thus indicates that the forenoon duration, that is sunrise to 1200, will be longer, and also the afternoon duration, that is 1200 to sunset, will be shorter. So let's take an example. Let's assume that we have a meridian passage time of 11:45. So we know from sunrise to 11:45, half of the day has passed. 50% of the day has passed. Now, for going up to 1200, another 15 minutes are there. So that means the forenoon duration is 50% of the day plus 15 minutes. Let's go to the afternoon duration now. Now the meridian passage occurring at 11:45, we know 11:45 to sunset will be exactly 50% of the day, and the afternoon starts after 1200 hours. So which tells us that the afternoon duration is 50% of the day minus 15 minutes. So this tells us that the forenoon duration, that is 50% of the day plus 15 minutes, is longer, and the afternoon duration, that is 50% of the day minus 15 minutes, will be shorter. Also, whenever the meridian passage time is after 1200 hours, the equation of time will be positive in that case, and the positive equation of time thus indicates that the forenoon duration, sunrise to 1200 hours, will be shorter, and also the afternoon duration, that is 1200 to sunset, will be of a longer duration. But I'll explain this to you by taking an example. Let me show you. Let me explain that here also. Let's assume that on a particular day, we had the meridian passage at 11:45 hours. The equation of time is given by Marpas minus 1200. So this gives us the value of equation of time as negative 15 minutes or minus 15 minutes. Also, we know that from sunrise to the meridian passage, that is 11:45, this duration will be equal to meridian passage to sunset, that is 11:45 to sunset duration, and both of these will be equal to 50% of the total duration of the day. Now we know the forenoon is the time before 1200 hours. So this forenoon time is sunrise to 11:45 plus 15 minutes. This is the forenoon time, time before 1200 hours on that particular day. Now we know sunrise to 11:45 is 50% of the day. So forenoon becomes 50% of the day plus 15 minutes. Now if you have a look at the afternoon time, which means after 1200 hours, this is basically 11:45 to sunset time minus 15 minutes, because we are starting afternoon at 1200. So 11:45 to sunset minus 15 minutes. 11:45 to sunset, Marpas to sunset is 50% of the day and minus 15 minutes. So you can clearly see
The forenoon is of the longer duration and the afternoon is of the shorter duration. Thus, as we discussed in the last slide, negative equation of time indicates the forenoon duration. Sunrise to 1200 will be longer as in this case, and also the afternoon duration 1200 to sunset will be shorter as in this case. And the vice versa is also true. Positive EOT indicates forenoon duration will be shorter and the afternoon duration will be longer. So is that clear, beta? This is the only question which I have seen coming related to the equation of time. So if you answer this, that should take care of the questions part. Clear हो गया बेटा? Okay. Yeah, sir, yes, sir, clear. Okay, all right. Okay, sir. Very good, beta. Done. So we are basically done with the time concept now. And now with this, we can enter into the numericals. So are you ready, beta? Shall we jump into the numericals? Okay, all right. 5 minutes? 7 o'clock, 1900. Okay, Yes, all sir. right. Be back at 1900. Okay, sir. Okay.
Okay, beta, back. Yes, sir. Okay, all right. So let's now see some action. Some